guys, welcome to my channel. How are you all doing? And I am doing absolutely good. If you're watching this face for the first time, then hi, my name is Ayushi Kesarwani and I do upload some makeup and self-care related content on this channel. If you love watching them, then please do make sure that you are subscribed to my channel. So today's video is all about this monochromatic pink look, which is Shreya Jain's look, and I am really impressed by her makeup skills. She is just flawless. So that's why I am going to recreate her one of the look, which is this monochromatic pink look, and she looks so stunning in this. I really can't match her vibe, but I tried to match her vibe. So without any further ado, let's see how I did it. Let's get started. First of all, I'm going to clip my hair because makeup करते करते ये सामने ज़रूर आने वाले हैं. So yeah. मेरे पास श्रेया के जैसा पिंक पुलोवर, फरी पुलोवर नहीं था, एंड मेरे पास कुछ ये मॉव कलर का था, एंड इसके स्लीव्स में फर है. So I thought, why not use that? Well, I am going to apply my moisturizer, and I am using Johnson's Baby का moisturizer, and I really love that. मुझे इसकी smell बहुत पसंद है. And for doing this, I am going to add little highlighter, loose highlighter into it, and going to apply it. Now look at that. I am going to use my primer. Today I'll be using this dark shade concealer, and आप कोई भी dark shade concealer भी ले सकते हो अगर आपके पास orange corrector नहीं है तो. So I'm going to apply that. So dark concealer can also hide your pigmentation. Now I am using a lighter shade on it. So now after that, I am going to use my Maybelline foundation. सो हमें एक ड्यूई लुक चाहिए. सो उसके लिए हम लोग अपना बेस को सेट नहीं करेंगे, कोई भी कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर यूज़ नहीं करेंगे. एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई माई ब्लश नाउ. एंड ब्लश भी आपका पिंक कलर का होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ मोनोक्रोमैटिक लुक. आप पूरे लुक में आप पिंक यूज़ करने वाले हो. सो आई एम गोइंग टू टेक माई पिंक लिपस्टिक, एंड इसको मैं एज अ ब्लश यूज़ करने वाली हूँ. एंड दिस शेड रियली लुक्स गुड as a blush. So yeah, I'm going to do that, and just like this, and make sure to blend it very quick. I'm gonna put on my nose, chin, and now I'm going to lift up my face with concealer. So now I'm going to set my base, and I am going to use my Swiss Beauty Makeup Fixer. Let's shake it well. On it. So now for eyebrows, I'm going to take this shadow.
So for the eye part, I'm going to use this palette, and she used a dark pink eyeshadow first. So for that, I'm going to take this pink eyeshadow. I totally forgot to conceal my eyes because I'm using pink shade and ये बहुत ज़्यादा pigmented नहीं होते हैं ये सारे colorful colors. So here I am going to conceal my eyes because this is very important. आप कोई भी colorful eyeshadow लगाते हो थोड़ा सा light shade का, तो make sure कि आप अपने eyes पे concealer ज़रूर apply करो. आपका eyeshadow और भी अच्छे से दिखेगा, I mean pop करेगा. So after this, I am going to set my concealer with this white eyeshadow. Okay. Again, I am going to take this pink eyeshadow. So now I'm done with this dark pink eyeshadow and I'm going to use a lighter one as she used. Brush भी change कर लिया है, so I'm going to do a light eyeshadow. So I'm trying to blend this eyeshadow with the darker one, and now you can see the effect. So after this transition, she used a pink shimmer eyeshadow, and मेरे पास check करना पड़ेगा, I think है मेरे पास. So basically I have two options and वो ये है. So let me swatch it. Option is in this palette. Sorry. So I have this pink shimmer. कौन सा अप्लाई करूँ, प्लीज़ कमेंट. अगर आप जब तक कमेंट करोगे मैं अप्लाई कर चुकी होंगी, बट देखते हैं आप कौन सा पिक करते हो. सो आई थिंक अगर ये यूज़ करूँगी पिंक शिमर तो मेरे आई शेडो में ही ब्लेंड हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा वाइट कास्ट भी चाहिए पिंक के साथ. सो आई थिंक आई विल गो विथ दिस वन. सो नाउ वाव, सेम मैं साइज पे भी कर लूँगी. बस फिंगर के टिप पे आपको लेना है लाइक दिस, एंड आपको इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते करते मिडल पे आना है. एंड दैट्स इट. So I am done with the eyeshadow part, and for the liner she used a dark pink magenta eyeshadow. So I am going to mix these two colors.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू माई लोअर लैश लाइन। जो मैंने आईलाइनर के लिए यूज़ किया था उसको मैं लोअर लैश लाइन पे भी यूज़ करूँगी। I'm going to use this light eyeshadow on my inner corner. Now after that she used a liquid shimmer. So I have also a liquid shimmer from Swiss Beauty and ये pink shade में भी है. I am glad I have it. So let me swatch it for you all guys. Now wow, see the glitter part in it. So this really changed the whole look of this eyeshadow and I am totally loving it. मुझे मन कर रहा है थोड़ा सा ये ऊपर की inner corner पे भी add कर लूँ. So I am going to do that. Like wow. And believe me guys, ये कैमरे पे उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है but it is looking very beautiful on my eyes and I am going to do that. अब मैं किसी भी पार्टी में इवेंट में जब भी जाऊँगी I am sure that I am going to do this on my liner. She used falsies, so I am going to apply my falsies for the first time ever. मैंने आज तक कभी भी falsies नहीं अप्लाई किया है. I mean मुझे अपने लैशेस पे मस्कारा का भी हैवी कोट करना बहुत ही मेरे आईज़ को पेन देता है. पता नहीं क्यों मुझे बहुत हैवी सा फील होता है. So that's why I never used falsies. So but श्रेया ने यूज़ किया था. So I am going to do that also. देखती हूँ पहला ट्राई है हो पाता है कि नहीं, वरना बस मस्कारा लगा के इसको फिनिश करेंगे. तो जल्दी से मैं इसको ट्राई करती हूँ. I mean I really can't handle it. मेरे आँख से आंसू बहना स्टार्ट हो गए. I have to remove them. Sorry, I can't. मैं मस्कारे से काम चला लूँगी but ये मेरे बस की बात नहीं है. So simply I am going to use my mascara. And now I'm going to highlight my face with a pink highlighter. And for lipstick, I'm going to use this lip combo. And now I thought मैं इससे फिल करूँ अपने लिप्स को and then highlight करूँगी इससे अपने लिप्स को. I am almost ready, so give me a 1 second, I'll be right back.
So what you guys think about this makeup look, this monochromatic look? And of course, if you guys love it, then please do comment in the comment section. And also like, share and subscribe to my channel. And thank you for watching this video. And of course, Shreya, if you're watching this video, then hi and I love you. I really love your makeup videos. So yeah, you inspire me. And of course, I love you. Also guys, please rate this look कि मैंने श्रेया जैन के मेकअप के साथ justice किया कि नहीं किया है. So thank you for watching my today's video. And if you haven't subscribed yet, then please do it. And मिलती हूँ मैं आपसे next video. Till then, watch my previous ones. And goodbye. Take care. Love you.